The Lantern of Whispers, Sargoshiyon ka Lalateen. In the small coastal town of Windmere, where the sea was always stormy and the cliffs echoed with ancient legends, lived a boy named Elliot. छोटे से साहली शहर विंडमेयर में, जहां समंदर हमेशा तूफानी रहता और चट्टानें कदीम दास्तानों की गूंज से भरपूर होती, एक लड़का रहता था जिसका नाम एलियट था. He was not particularly brave, nor exceptionally clever, but he had something more enduring: curiosity. वो ना तो खास बहादुर था और ना ही बहुत ज़हीन, लेकिन इसके पास एक और चीज़ थी जो ज़्यादा देर पाती: tajassus. Elliot spent most of his days wandering the rocky beaches, collecting driftwood and listening to sailors' tales. Elliot अपने ज़्यादातर दिन पथरीले साहिलों पर घूमते, बहते लकड़ियाँ जमा करते और मलाहों की कहानियाँ सुनते गुजारता. One morning, after a particularly violent storm, Elliot found a strange object half buried in the sand. एक सुबह, एक शदीद तूफान के बाद, एलियट को रेत में आधा दबा हुआ एक अजीब सा चीज मिला. It was a brass lantern, intricately carved with symbols that shimmered when touched by sunlight. वो एक पीतल का लालटीन था, जिस पर नफीस अंदाज में नक्शो निगार बने हुए थे, जो धूप पड़ने पर चमकने लगते थे. He took the lantern home, cleaned it, and placed it by his window. वो लालटीन को घर ले आया, साफ किया और अपनी खिड़की के पास रख दिया. That night, as the wind howled and the tide crashed against the shore, Elliot heard a whisper. इसी रात, जब हवा जोर से चल रही थी और समंदर की लहरें साहिल से टकरा रही थीं, एलियट ने एक सरगोशी सुनी. Not outside, inside the room. नहीं बाहर नहीं, कमरे के अंदर. The lantern glowed faintly. ललटीन हल्की सी चमकने लगी. A voice barely audible called his name. Elliot? एक आवाज जो मुश्किल सुनाई दे रही थी ने इसका नाम पुकारा, Elliot. Startled but drawn by curiosity, Elliot asked, "Who's there?" चौंकने के बावजूद tajassus के बायस Elliot ने पूछा, कौन है? The whisper answered, "A seeker like you. I am bound to the lantern. I can show you what was lost." सरगोशी ने जवाब दिया, एक तलाश करने वाला तुम्हारी तरह. मैं इस लालटीन से बंधा हूँ. मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ जो खो चुका है. From that night on, every time Elliot lit the lantern, he would see visions, snippets of old Windmere, a forgotten shipwreck, a buried treasure, an unresolved betrayal between brothers who once ruled the town. इस रात के बाद, जब भी एलियट लालटीन रोशन करता, वो मनाजिर देखता, पुराने विंडमेयर की झलकियाँ, एक भूली हुई जहाज की तबाही, दफन खजाना और दो भाइयों के दरमियान एक नातमाम धोखा जिन्होंने कभी इस शहर पर हुकूमत की थी. Elliot became obsessed. Elliot जुनून का शिकार हो गया. He documented every vision in a leather-bound journal, trying to piece together a mystery lost to time. वो हर मंजर को चमड़े की जल्द वाले जर्नल में लिखता, वक्त के हाथों खोई हुई एक मामा को जोड़ने की कोशिश करता. Soon, people began to notice Elliot's behavior. जल्द ही लोगों ने एलियट के रवैये को नोट करना शुरू कर दिया. His neighbors called him strange, even dangerous. इसके हमसाए इसे अजीब, बल्कि खतरनाक कहने लगे. But an elderly librarian named Mrs. Carrow took an interest in his research. लेकिन एक बूढ़ी लाइब्रेरियन जिसका नाम मिसेस कैरो था, इसकी तहकीक में दिलचस्पी लेने लगे. The Lantern of Whispers, she said one evening, was a relic stolen from the archives of the Order of Tides. It reveals truths, but at a cost. सरगोशियों का लालटीन, एक शाम उसने कहा, एक मुकद्दस चीज थी जो ऑर्डर ऑफ टाइड्स के जखीरे से चोरी की गई थी. ये सच्चाइयों को जाहिर करता है, लेकिन इसकी कीमत होती है. Elliot didn't listen. Elliot ने बात ना सुनी. His ambition outgrew his fear. इसकी ख्वाहिश ने इसके खौफ पर काबू पा लिया. One night, the lantern showed him the final vision, a vault beneath the cliffs, sealed by a mechanism that responded only to truth. एक रात लालटीन ने इसे आखिरी मंजर दिखाया, चट्टानों के नीचे एक तहखाना जो एक ऐसे निज़ाम से बंद था जो सिर्फ सच्चाई पर रद्द अमल देता था. Guided by the whispering light, Elliot entered the cave. सरगोशी करती रोशनी की रहनुमाई में Elliot गार में दाखिल हुआ. The air was heavy, full of salt and silence. फजा भारी थी,
नमक और खामोशी से भरपूर. The vault stood before him, stone, iron, and riddled with engravings. तहा खाना इसके सामने था, पत्थर, लोहा और नक्शो निगार से भरा हुआ. The lantern's glow intensified. लालटीन की रोशनी तेज हो गई. Elliot stepped forward and whispered, I seek the truth. Elliot आगे बढ़ा और सरगोशी की, मैं सच्चाई तलाश करता हूँ. The vault opened. तहा खाना खुल गया. Inside, he found scrolls, relics, and bones. अंदर इसे तुमार, नवादरात और हड्डियां मिलें. The remains of those who had sought answers before him. इन लोगों की बाकियात जो इससे पहले जवाब तलाश कर चुके थे. The voice whispered one last time, Truth is not a prize, Elliot. It is a weight. आवाज ने आखिरी बार सरगोशी की, सच्चाई इनाम नहीं है, Elliot, ये एक बोझ है. The lantern dimmed. लालटीन मुधम हो गई. Elliot left the cave changed. Elliot गार से बदला हुआ निकला. He still walked the beaches, but his journal remained closed. वो अब भी साहिलों पर चलता, लेकिन इसका जर्नल बंद ही रहा. People say he speaks less now, listens more. लोग कहते हैं कि वो अब कम बोलता है, ज़्यादा सुनता है. And though the lantern sits on his window, he never lights it again. और अगरचा लालटीन अब भी इसकी खिड़की पर रखी है, वो इसे कभी दोबारा रोशन नहीं करता. Because some truths are better left unspoken. क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ बेहतर हैं कि उन्हें ना कहा जाए. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो अब कहानी दोबारा सुनें. इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. In the small coastal town of Windermere, where the sea was always stormy and the cliffs echoed with ancient legends, lived a boy named Elliot. He was not particularly brave, nor exceptionally clever, but he had something more enduring. Curiosity. Elliot spent most of his days wandering the rocky beaches, collecting driftwood and listening to sailors' tales. One morning, after a particularly violent storm, Elliot found a strange object half buried in the sand. It was a brass lantern, intricately carved with symbols that shimmered when touched by sunlight. He took the lantern home, cleaned it, and placed it by his window. That night, as the wind howled and the tide crashed against the shore, Elliot heard a whisper, not outside, inside the room. The lantern glowed faintly. A voice, barely audible, called his name. Elliot! Startled but drawn by curiosity, Elliot asked, Who's there? The whisper answered, A seeker, like you. I am bound to the lantern. I can show you what was lost. From that night on, every time Elliot lit the lantern, he would see visions, snippets of old Windermere, a forgotten shipwreck, a buried treasure, an unresolved betrayal between brothers who once ruled the town. Elliot became obsessed. He documented every vision in a leather-bound journal, trying to piece together a mystery lost to time. Soon, people began to notice Elliot's behavior. His neighbors called him strange, even dangerous, but an elderly librarian named Mrs. Caro took an interest in his research. The Lantern of Whispers, she said one evening, was a relic stolen from the archives of the Order of Tides. It reveals truths, but at a cost. Elliot didn't listen. His ambition outgrew his fear. One night, the lantern showed him the final vision, a vault beneath the cliffs, sealed by a mechanism that responded only to truth. Guided by the whispering light, Elliot entered the cave. The air was heavy, full of salt and silence. The vault stood before him, stone, iron, and riddled with engravings. The lantern's glow intensified. Elliot stepped forward and whispered, I seek the truth. The vault opened. Inside he found scrolls, relics, and bones, the remains of those who had sought answers before him. The voice whispered one last time, Truth is not a prize, Elliot. It is a weight. The lantern dimmed. Elliot left the cave changed. He still walked the beaches, but his journal remained closed. People say he speaks less now, listens more, and though the lantern still sits on his window, he never lights it again, because some truths are better left unspoken. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं. हमारी वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया. अगली वीडियो में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.